नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास कंटिन्यू चल रही थी। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। साथ में नर्मदा, सोन और जोहिला, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्लूइड मैकेनिक्स 24 आईएएस मेंस का सेशन है। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन अ लेबोरेटिंग टेस्ट वाज लेबोरेटिंग टेस्ट was carried out on a pump carried out on a pump, it was found that it was found that for a pump total head of total head of 36 meter at 36 meter at a discharge of 0.05 meter cube per second. All right. Cavitation begins when cavitation cavitation begins when the sum of the state when the sum of the state pressure and and velocity head at the inlet was at the inlet was reduced to 3.5 meter reduced to 3.5 meter. The atmospheric pressure was the atmospheric pressure was 750 mm of Hg, and the and the vapor pressure of water was 1.8 kilopascal. If the pump is to if the pump is to operate at a operate at a location where where atmospheric pressure was was reduced to 620 mm of Hg, and the temperature is so reduced that so reduced that the vapor pressure of water vapor pressure of water is 830 Pascal.
What is the value of cavitation? What is the value of cavitation parameter when the pump develops the same total head and discharge, total head and discharge. It is necessary to reduce. It is necessary, necessary to reduce the height of the height of pump and if so by how much? बताइए किस तरह से होगा सॉल्यूशन। हाँ जी, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ लैबोरेटरी टेस्ट वाज carried out on a pump, it was found that for a pump total head of 36 meter at a discharge of 0.05 meter cube per second. Cavitation begins when the sum of the state pressure and velocity head at inlet was reduced to 3.5 meter. The atmospheric pressure was 750 mm of Hg and vapor pressure of water was 1.8 kilopascal. If the pump is to be operated at a location where atmospheric pressure was reduced to 620 mm of Hg and the temperature is so reduced that vapor pressure of water is 830 Pascal, what is the value of cavitation parameter when the pump develops the same total head and discharge? It is necessary to reduce the height of the pump and if so how much? So सबसे से पहले ही डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो।
ये तीनों कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट है, यहाँ पे आपका ये रहा फेज रिजर्वायर का, ये रहा लेवल ऑफ इनिशियल। यहाँ से हमारे इस वाटर कॉलम का डिस्टेंस है h, और ये रहा हमारा क्या साथियों, पंप। ओके, so shall we proceed now? Moving over, net positive suction head is equal to initial pressure by rho g plus initial velocity का स्क्वायर अपॉन 2g माइनस of vapor pressure upon rho g. Easy? Now, cavitation parameter sigma, Thomas cavitation factor is equal to net positive suction head division over manometric head. So, the sigma is equal to pi by rho g plus vi square upon 2g minus vapor pressure by rho g upon hm. इक्वेशन 1 नामकरण कर दिए। नाउ अब हम जो फेवरेट फ्लूइड डायनेमिक्स की इक्वेशन अपनाते हैं, बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2 पॉइंट के बीच में लगाते हैं इनिशियल। सो पी आई बाय रो जी प्लस वी आई बाय 2g प्लस z1 इज इक्वल टू p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ZI इनिशियल प्लस हेड लॉस। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाती है पी आई बाई रो जी प्लस पी आई स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो जी, देन ज़ीरो हो जाता है वेलोसिटी हेड एंड आपका डेटम हेड z माइनस हेड लॉस। राइट, नाउ सिग्मा इज इक्वल टू atmospheric pressure on rho g minus z minus hl minus vapor pressure by rho g division over the hm. Now but अपने पास जो है कुछ कंडीशन गिवन है, पी आई बाई रो जी प्लस बी आई स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 3.5, ये गिवन वाली कंडीशन है। तो इन द स्टेज P1 एंड PV, इस स्टेज में इनिशियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर के। सो हियर इट इज अल्ट्रासोल डिवीजन ओवर 10 क्यूब बाय 9.81 इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 3.5. So the V initial is equal to 8.067 ms meter per second and sigma is equal to pi by rho g plus vi square upon 2g minus pv upon rho g and whole division over hm.
here putting the value pi is equal to pv, तो पहला कट जाएगा, ओनली v स्क्वायर बचेगा. सिग्मा c इज इक्वल टू pi स्क्वायर अपॉन 2g hm. So sigma is equal to 8.067 square upon 2 into 9.81 into 36. The value is come on this stage 0.092. Now head loss जो है नेगलेक्ट कर लें, means HL is equal to 0. On this note, we have the further development. Sigma is equal to P ATM upon rho G minus Z1 minus PV upon rho G divided by 36. So we have the value of sigma 0.092.75 into 13.6 minus Z1 minus 1800 upon 9810 whole division over 36. The calculated value Z1 is equal to 6.7 meter. Easy peasy. Now for the next case, sigma c is equal to atmospheric by rho g minus Z2 minus PV upon rho g division over the 36. So here it is 0.092 is equal to 0.6 into 13.6 minus Z2 minus 830 upon 9810 divided by 36. So the Z2 value is to be 5.03 meter. Now reduced by height, ये वो होगा reduced height हमारे पास 6.7 minus 5.03, which gives the value 167 meter. इतना ही था.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिंगल एक्टिंग reciprocating pump has following characteristics. क्या स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। सिलेंडर डायमीटर, सिलेंडर डायमीटर 15 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ 30 सेंटीमीटर, सक्शन हेड 2.5 मीटर, diameter of suction pipe 5 centimeter, suction pipe length suction pipe length 5 centimeter, atmospheric pressure atmospheric pressure 10 meter of water, absolute 1, and cavitation occurs at and cavitation occurs at 2 meter of water, absolute. Determine the maximum speed at which the pump at which the pump can be run can be run without cavitation. चलो देखते हैं। हमारे पास जो है इन द केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कंडीशन होती है मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन हेड हेड ड्यूरिंग द सक्शन। ओके, HAS is equal to length of suction into gravity AP upon AS टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा तो पता है क्या होता है, 2 πn/60। पुट द वैल्यू, वी हैव टू गेट द आंसर 0.1047 न्यूटन। इजी। नाउ नेक्स्ट वन,
ए अपॉन ए एस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डियर 15 डिवीजन ओवर दी 5 square. Holy cow, we get the value of 9. HAS 5 upon 9.81 multiply with 9 1.1047 Newton. Square into 0.15. So here we have the HAS suction side calculated to be 0.007543 n square. Now, now next part. Next part we have the limiting condition for limiting condition for a suction pipe or a suction pipe HAS plus HV suction vapor pressure and the suction head is equal to atmospheric one. So HAS plus 2 plus 2.5 is equal to 10. Now the value is to be calculated as HAS is equal to 5.5. Now we have the some values in the equation. We have to form that. So put it 0.007543 n square is equal to 5.5. So take the calci and give me the final value of n is to be 27 rpm. Easy that way. ठीक है, अब आपको जो है ये एंड होने के बाद एक काम करना है. क्या? वीएम क्लास को लाइक करना है साथियों, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पेनिट्रेट करना है. ठीक है, इतना ही रखते हैं आपका सेशन. जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहे, यही ईश्वर से हमारी कामना है. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू.